Hello students, good morning. How are you all? कैसे हैं आप लोग? Okay. Good morning all of you. Okay, good morning Simran. Students, in today class we will discuss a remaining portion of function just like a GIF function and lambda function, some higher order function just like a map, filter, reduce. And apart from this, we will discuss recursion. Is very important. This is the backbone of समझ रहे हैं ना फंक्शन का. इससे क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में 100% मिलेगा. Okay. So now let's start. Yes. Good morning, Uddhav. Good morning. So student, this is my brief profile. You can join this Telegram ID, right? ये Telegram ID आप इसको join कर सकते हैं. Now in today class we will discuss GIF and lambda function, some higher order function just like map, filter, and reduce, and recursion, and types of recursion, some recursion questions, and import statement, and some PYQs. Last GATE 2024 and 2025 में जो questions आपके GATE exam में पूछे गए हैं, we will discuss, right? Okay. So चलिए start करते हैं आज की class. So first of all, discuss GIF function, student. What is GIF function, student? The GIF function in Python, student, is used to combine two or more iterables object like list, tuples, or strings, right? Two or more iterables, element wise, and creating pairs of corresponding elements, right? Creating pairs in the form of tuple, creating pairs or tuple for corresponding element. Okay. सर सिंटैक्स जिप का सिंटैक्स क्या होता है तो एग्जाम्पल से समझाइए. तो माय डियर स्टूडेंट आप लिखिए सर जिप इटरेबल 1, राइट, ऑब्जेक्ट इटरेबल सर 2, लाइक दैट. इस तरह से आप लिखेंगे. सर ये क्या काम करेगा बच्चे? इट रिटर्न्स एन इटरेटर ऑफ टपल. It returns an iterator of tuple where each tuple contain element from the corresponding position of input iterable, right? If iterable are of unequal length, GIF stops at the shortest one. Means what, sir? मान लेते हैं बच्चे मैं एक ले लेता हूं. मैंने एक नेम्स एक लिस्ट ले लिया बच्चे. नेम्स के अंदर एलिस, बॉब, चार्ली. ये एक ट्रेबल, ये एक लिस्ट ले लिया मैंने. ओके. एनदर मैंने ले लिया एज. एज का सर एज इज लाइक 25, 30, 35, राइट. देन मैंने लिखा द जिप, ये जिप फंक्शन नेम्स, फर्स्ट ट्रेबल नेम्स एंड एजेस, राइट. और एक वेरिएबल जिप इक्वल्स टू दिस वन. Then what will happen, student? It create an iterator. It create an iterator. It create an iterator, sir. And I want to collect this iterator in the form of list, student. So you can use list
you can use, sir, list function, right? List constructor, and you pass here zip, and I want to print this, student. Then what it will print? Yes, what it will print, student? So first of all, this is doing what, student? zip name iterator, it create iterator pairs, right? zip function से क्या होगा बच्चे? It create pairs, sir. Alice, one corresponding this one and this one and this one, sir. Alice 25. Okay, next is Bob, this Bob 30, and next one is Charlie 35. Okay, and you print in the form of what's a list. So this is the output. This is the use of zip function, बच्चे. This is the use of zip function. Okay. ये सुधा डेफिनेटली यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है. मैं अभी आफ्टर क्लास के बाद करूँगा. कल का पीडीएफ भी अपलोड कर दीजिए. कल का पीडीएफ हुआ नहीं है, मैंने बोला तो था, सेंड भी कर दिया था. मैं अभी देखता हूँ आफ्टर क्लास सुधा उसको मैं अपलोड करा के ही जाऊँगा, राइट. मैंने सारा मटेरियल सेंड कर दिया था ऑपरेशन टीम को. मे बी हो सकता है कर रहे हो जाएगा. ओके. Okay, so this is the use of बच्चे zip function. Now sir, this is the example. Sir, क्या मैं एक से ज़्यादा इटरेबल को कर सकता हूँ सर? Can I use zip function for more than two? Yes, definitely you can perform more than two. So यहाँ एक लिस्ट है names बच्चे, दूसरा age है and city है. So I am passing here zip names, age and cities. Then what will happen, student? So first आप देखेंगे ना, ये इन तीन का एक ये टेप्लेट एक टपल बन जाएगा बच्चे. फिर बॉब 30 एंड न्यूयॉर्क ये बनेगा. चार्ली 35 एंड नहीं न्यूयॉर्क तो एक ही है मेरे भाई. 35 एंड पेरिस, दिस वन. सो व्हाट इज द आउटपुट हियर, स्टूडेंट? You collect in list, so output in the form of a list, student. Alice 25, New York, right? Second, sir, Bob 30, London. Okay, and next is Charlie 35, Paris. So this is the output, student. Sir, what about if iterable are of unequal length, then what will happen, student? If iterable are of unequal length, suppose the length of this is 3, the length of this is 3, the length of this is 2, right? If iterable are unequal length, then what will happen, student? Then zip stop at the shortest one, student. Zip stop at the shortest one, right? So handling unequal length, if the iterable have different length, zip stop at the shortest one, student. So here this name contain two object, name this list contain two object and age is equals to 3. Then in this case, sir, first this pair and Bob, this 35 is ignored. This is extra element, so it is ignored, bache, right? Extra element in this list and it is ignored. So print list zip, then what will happen, student? What is the output of here? Alice 25 and Bob 30. So this is the output. 35 ignore, right? In this case 35 ignore.
Now creating a dictionary from two list, you can use GIF function create dictionary के लिए. So here keys equals to, these are the keys, values equals to a list 25 New York, and dictionary equals to, I am using this dict constructor dict method बच्चे. So GIF keys and value. So what is the output here? Sir क्या output आएगा बच्चे dictionary, इसको अगर आप display कराएंगे. So first this become what? Key, and this is the value, student, right? A list is a value. Similarly, so age is a key, and 25 is a value. Similarly, city is a key, and New York is a value. So this is the answer. Okay. So in this way, you can create list also. All right. So this is the use of GIF function, but GIF is not so important for gate point of view. Okay. But चल रहा है तो इसलिए recursion is important, student. Lambda function भी आ सकता है. Lambda is also important. So lambda function in Python is what? What is lambda function, बच्चे? What is lambda function? So lambda function in Python is a small anonymous function, right? That is defined using the lambda keyword, right? There is no name of function. Function ka there is no name of function, right? It is defined by the lambda keyword. Okay, that's why this is known as anonymous function, and it can have multiple argument but only one expression. It can have only one multiple argument but only one expression. Lambda function are commonly used for short, simple and operation के लिए, right? The syntax for lambda function is what, student? You can write here lambda keyword. This you write here lambda keyword. Arguments, you can write here multiple arguments, but the expression, this is a single expression, and it return automatically, right? Return automatically. So by using lambda function के लिए, what is lambda here? What is lambda? Lambda is a keyword to define the lambda function. Sir, argument, what is argument? Input to the function, just like a normal function parameter, just like a normal function parameter, right? What is this expression? This is a single line expression that is evaluated and returned. That is evaluated and returned. Okay. So this is input, just like a function, and here this is output, just like a normal function, right? So how we can use lambda function? For lambda function के लिए, sir, square, this is pointing to in Python everything is an object, student. Either function or classes, everything is an object. All right. So square equals to lambda square variable. This is a lambda function, lambda x. This is input, and it return what? This is the expression x into x. Okay. So what is the answer for this, student? Yes, very simple. What is the answer for this? You are passing this input parameter is 5. Here this lambda is hit. You are passing here 5, so this lambda is hit, and the output of sir 25. Okay, output or is 25. Or you can write this one like this, right? Here I am writing, sir, print. I'm writing print. You can replace this square here. So this is lambda. Lambda x into x. Directly you can write like this also. Okay. Square, this 5. Okay. So lambda x into x. So just nothing, but I am replacing this square, this function here. Okay. So lambda x into x. So it will be what? It print so 25. This is a single line expression, anonymous function, because there is no function name. This is a lambda is a general keyword, right? So that's why this is known as anonymous. It is equivalent to like this function. This is equivalent to this function. Okay.
So when you call this function, so you come here, then x equals to what? 5. It return x into x. So the output is 25. But normal function you have to return explicitly. You have to return what, sir? Explicitly you have to return. But here there is implicit, automatically return. No need to write return statement, right? In lambda, in normal function call, you have to write function name also. Here function name is square. Here no need to write function name student. That's why this is anonymous function. This is used for single line expression, right? And this is suitable for multi-line expression, right? For complex logic, use normal function. For single line expression logic, use lambda function. Okay. So tell me, student, what is the answer for this? So here add is this is a variable reference pointing to this lambda function. Here I am passing input 3 5. This is 3 5. So did it directly hit and return what, student? What it returns? A direct 8. Okay. Or we can write like this also. And it hit, it produced what, sir? 8. Okay. Now, student, what is the answer for this question? Everyone reply answer for this question. Yes, Siddhu, Uddhav, Simran, all of you reply answer for this question. I'm waiting for your answer. Yes, student. Yes, Siddhu is saying 2. What about others? This is the definition of fold function, student. And here I am calling this function. If you call this function, student, then fn is pointing to this lambda function. Then what is fn? Sir, this fn is pointing to this lambda function. And this list is pointing to this list, right? Okay. So fn equals to what, student? Fn is pointing to this one. Lambda, this is b minus a. And this LST is pointing to what, sir? This list 1 3 5 7. And what is res? Res means result. Res equals to what, sir? List 0. So index of this list, student, what, sir? Index 0, sir, 1 2 and 3. So what is list 0 contain, bache? Sir, list 0 contain 1. So res equals to 1. Now for x in list 1 onward, here you are this is slicing. So for x in what, sir? List 1 onward, what is the meaning of this line, student? This slicing means this one. Okay. 3 5 and 7. Understood? And res equals to
res equals to first fn res, this res is 1 and x. For every x, if x is 3, for x is 3, then this lambda call for 1, 3. So my dear student, this lambda function fn is called for 2 parameter 1, 3. So if you pass here 1, 3, then it produce what, sir? B minus a. So this is 2, right? So res equals to result equals to what, sir? 2. Okay. And after this, you go to this one again. This is a loop. So next time x is what, sir? 5. Then res equals to fn this res 2 and this is 5. So you are passing 2 parameter 2, 5. This lambda again hit is student 2, 5. It produces b minus a. So that is 3. Okay. So the answer of this is what, sir? 3. This is a loop. Again go to this loop and now x is what, sir? 7. So res equals to fn 3 and 7. So again this lambda hit for 3, 7 parameter 3 and 7. So it produces what? B minus a, that is 4. B minus a, that is 4, student. Okay. Now after this loop is completely iterate and you return and result what, sir? Res. You return here, sir, res. So res is what, sir? This is 4. Okay. This 4, student. This 4. So this is answer. Okay. So right answer is not 2, 3, 4, student. Right answer is 4. Okay. Because is loop के बाद you are returning only finally after loop you are returning this res, final this res. So this is answer. Understood? Not 2, 3, 4. Final answer is 4. Understood? Okay. Now next, using a lambda with higher order function. Map, filter and reduce are higher order function. Sir, what is the meaning of higher order function? Higher order function, it is a function of a function, right? Sir, higher order function just like map, filter and reduce. Sir, what are the applications of lambda function? Lambda function used in higher order function just like a map, filter and reduce, right? Higher order function means what? It is a function of a function. It is a function of a function. So these map, filter and reduce are known as higher order function. Okay. Because it is a function of a function. Okay. So first discuss bache map function. Sir, map, what is the syntax of map bache? A map apply a function to each element of an iterable, right? Applies a function to each element of an iterable. Sir, what is iterable? Iterable just like a like list, right? Tuple, etc. Syntax क्या है? Map, function and iterable. Syntax just like right here map, this map, right here map function, and inside this function and iterable object, right? Right here function and iterable. Okay, this is the syntax, student. So map is doing what? Apply a function to each element of an iterable, this object. To each element of this iterable, it apply this function, student. So for example, this is a example, student. What is the answer for this question? The output of this one. So this is function, student. Right here higher order function, because function
inside function. So here this map is a function and it contain this is also function, student. That's why this is known as higher order function. So first parameter is what, student? Function. And second is iterable object. So what is iterable object here? Numbers. Number is what, sir? This is a list. Then this is a list, student. You are passing this list. Then the definition of map, apply a function. Which function? This function to each element of an this iterable, student. Okay. So you can apply this lambda function. This is doing what? So every element, sir, 1 की power 2. So you are returning this, sir, output क्या होगा? Sir, 1, apply for 1 की power 2 equals to 1. The next is 2 power 2 equals to 4. Next is 3, so 3 power 2 equals to 9. Next is 4 power 2 equals to what, sir? 16. Next is 25 power is what, sir? 25. So this is the output. Understood? This is the use of map function. Next, student, filter function. This is also higher order function. So filter select only those elements from iterable which satisfy a given condition, बच्चे. Okay. Selects only those elements from iterable which satisfy a given condition. Okay. Which satisfy a given condition. Syntax. What is the syntax of filter, student? How we can apply this filter method, student? So write filter. For this is write function name filter. And first one is what, sir? Function. Second is iterable object. So this is the filter function, student. What is a filter is doing? So select only those elements from the iterable which satisfy a given condition. All right. So what is the syntax? Write here filter function name and pass function and pass iterable object. Okay. Then it select only those elements from this iterable student, this iterable object which satisfied this given condition, right? So basically this is used for filter, more filter करने के लिए, condition के लिए. Okay. So for example, sir, this is a number. Here I am passing this number, this iterable, and this is a function, student. Function inside function. Okay. So ये आपका function है, and this is a iterable object. Understood? So वो सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे. select element from this iterable, student. Select element from this iterable which satisfied this condition, student. What is this condition? Sir, even number condition. X modulus 2 equals to 0. So जो even number है वो select होके आ जाएंगे, right? So what is the output of this one? Let first apply on this first 1 modulus 2 equals to 0. No. So this is not selected. Now 2 modulus 2 equals to 0. Yes. So 2 select. Okay. Now 3 modulus 2 equals to 0 and no. So this is not selected, right? Now 4 modulus 2 equals to 0. Yes, even number. So this is selected. Now similarly 5 apply हुआ 5 modulus 2 equals to 0. No, not selected. 6 modulus 2. This is selected, student. So this is the output. All right. Now next is, sir, reduce. This is also higher order function. So for reduce function,
What reduce is doing, student? What is the importance of reduce? What is the use of reduce function? Reduce applies a function cumulatively to items of an iterable, right, to reduce it to a single value, बच्चे. Sir, reduce apply a function cumulatively reduce apply a function cumulatively to items of an iterable to items of an iterable to reduce it to a single value, right, student? Okay. The syntax for reduce, के लिए just like write reduce this function name reduce right here function, okay, then iterable object, and right here initializer, student, right? Sorry, function पहले iterable, then initializer, right? This is the syntax. So, but first of all, if you want to use reduce function, then you have to import, sir, reduce function from function tool module. बच्चे function tool module. So reduce function, this is available on function tool module. So first of all, if you want to use reduce function, then first of all you have to import. You have to import reduce function from which module? This exists in function tool module. So import reduce from function tool module, right? Okay. Now numbers equals to 1, 2, 3, 4, and some underscore this reduce. I am using this reduce function. Okay. Function name and lambda, this is a function, and numbers. बच्चे यहाँ initializer, this is optional. This is optional, okay. So right here this reduce function name and this function, बच्चे, so this is function, okay. Second is iterable, so this is iterable, and this is optional. So it works cumulatively. Cumulatively means what? First apply on two values. First apply on these two values. So sir, x plus y, it is 3. Okay, ये क्या हुआ? Sir, x plus y, this is 3. Then cumulatively this works on these two values. So result is what, sir? Result is 3. Then first value, this is 3, and now y is this 3. Cumulatively next is what, sir? Basically what is sum. So 3 plus 3 is 6. So first value is 6, second y is 4. So cumulatively this is what, sir? So 6 plus 4 is 10. So it produces what, student? It produces 10. So 10 is the answer for this question. Understood? So in this way you can apply reduce function, all right? So tell me, student, what is the answer for this question? Yes, everyone reply answer for this question.
Yes, student. What is the right answer? Yes, Uddhav, answer is minus 59. What about others? Siddhu is saying minus 27. I took it exponential. Okay. So what is the right answer? What is your answer? So my dear student, here this the third term is what, sir? Initializer, right? Initializer. So यहाँ पे initializer is what? Sir, 10. So this is function. This is initializer. Okay. So lambda x comma y equals to what? X minus 2 into y. This is lambda function, right? And initializer means first term initializer is given what, sir? X equals to 10. Initializer x equals to 10, right? Start. Start x equals to 10. First term is x equals to 10 initialization. Sir, if y equals to 1, so here data, this is iterator, right? It is what, sir? It is list and reduce lambda x by 10. So finally result आपको बताना है बच्चे. So first y equals to 1, then y equals to 1, then what is the value of this one, this expression? Sir, 8 minus 2 into 2 into 1, because y is 1. So it will be what? 8 minus 2 is 6. So this 6, this x is 6. Okay. Cumulatively, it work cumulatively. So x is what, student? 6. सिक्स क्यों है भाई? सर x की वैल्यू व्हाट इज x? स्टूडेंट x इज व्हाट सर? 10 है ना? x minus x is 10. So 10 minus 2 into, sir, 1. 2 into 1. So it will be 8. So that's why x is what, student? 8. Now in next time, sir, y equals to what, sir? Y equals to 2. So initializer, this is 8. Now the 8 minus what, sir?
8 minus 2 into, now this is y is 2, so it will be what, sir? 4. So now x equals to 4. Now y equals to 3. Y equals to 3, x minus 2y. So x is, sir, 4 minus 2 into, sir, what is y? Y is 3. So it will be what, sir? Minus 2. So x equals to minus 2. Now next, this 4. So y equals to 4, x is minus 2 into 2 into 4. So it will be what? Minus 10. Yes, this is minus 10. X equals to minus 10. Y equals to 5. So this is minus 10 minus 2 into 5. So it is what, sir? Minus 20. This is minus 20. Okay, that's all. So answer is what, student? Minus 20 is the right answer for this question. So right answer is what, sir? Minus 20. Understood? I think minus 20 is the right answer. Okay. So that's all higher order function. Now come to next topic, bache, recursion. Now come to next topic. Recursion, you know very well, sir, function calling itself. Okay. Function calling itself is called recursion. Okay. For example, if I talk about, sir, factorial, yeah, f means factorial. If n is less than equals to 1, here I am talking about bache positive value, right? Not for negative value. N less than equals to 1 means don't consider minus 1, minus 2. Here I am talking about only for positive value. If n less than 1 means what? If n is 0 or n is 1, right? So in this case, answer is what, sir? 1. Okay. So factorial of 0 is 1, factorial of 1 is 1, right? Either you can write n equals to 0 or n equals to 1, right? Or n less than equals to 1. Here I am talking about only for positive value, right? If n greater than 1, then what? Sir, factorial equals to n into, sir, fact of n minus 1. Okay. So basically, this is calling to itself. Fn is calling to fn minus 1, right? Function calling itself. ये fn minus 1 अपने आप को ही कॉल कर रहा है ना, right? fn minus 1 is called to, sir, recursively अपने आप की बॉडी को कॉल कर रहा है. Understood? So let's suppose I want to print, sir, f of, sir, 4. What is the value of f of 4, student? Sir, f of 5. This is the base condition. This is the base condition, right? Recursion termination condition. This is base condition. It is mandatory, bache. If you miss this base condition, then this is infinite recursion and stack overflow error. It generates stack overflow error, right? So if you call this fn function, this is not base condition. It called what, sir? Sir, 5 into, sir, fact into fact 4. Again, this is not base condition. It called what, sir? Sir, this is fact 3. This is not base condition. This is fact 2. And here this is not base case, sir, 2 into fact 1.
Now n equals to 1, this is the base condition, recursion terminated here. So this value produce 1. Now this is result equals to 2 into 1 equals to 2. This 2 pass here is student. So it gives 3 into 2 equals to what, sir? 6. This 6 pass here is student. This result gives 4 into 6 equals to 24. This 24 pass here is student. It gives 5 into 24. So it will be 120. So 120 pass here, and this is the result. In this way, recursion, this is the recursion working with you. Okay. This is the recursion working, but how recursion work? Bache, recursion in programming technique, where a function call itself to solve a smaller instance of a problem until it reaches a base case, right? How recursion work? Bache, a recursion function consists of two things, right? Yeah. First, if we talk about base case, student, right? Base case means kya hai? The stopping condition that prevent infinite recursion. My dear student, if I miss this condition, then what will happen? If I miss this condition, this next time it goes to sir 1 into f 0. For next time, sir 0 into in this case this is 0, but sometimes ये result क्या हो जाएगा? Infinite recursion, right? Understood? You got it my point? If you not mention this recursion termination condition, not mention base condition, then this is an infinite recursion, right? It occupy all the RAM, completely RAM. So stack overflow error, it generates stack overflow error, right? So base case, it is mandatory, bache. The stopping condition that prevent infinite recursion, it is compulsory, right? This is stopping condition that prevent infinite recursion. Second thing is what's a recursive case? Sir, what is the meaning of this recursive case? Recursive case, the function calls itself with a modified argument. If this argument is not modified, then it may be a infinite recursion. Sir, how, sir? Kaise? Let I write fn equals to n into fn. Then what will happen, student? If I call sir f5, then it calls sir 5 into f of 5. Again this calls sir 5 into f of 5. Again this calls sir 5 into f of 5. Right? Again this calls sir 5 into f of 5. So this is also infinite recursion, right, student? It occupy all RAMs, completely RAM, right? So careful, little bit careful. What you have to do, if you want to use recursion, then 100% you have to mention this base condition or recursion termination condition. Then second is recursive case. Parameter must be changed, student. The inside this value must be modified, right? Either decreasing function or divide function or square root function, like that, right? So it must be changed. If this is not changed, then again this is infinite recursion, right? So you have to care about these two things. If you use recursion, you have to mention base condition, and the parameter of recursive function must be changed, student. Okay, must be decrease or divide or square root. Okay. So these are the points related to function, bache. Function calling itself is called recursion. Recursion should definitely have termination condition, base condition, otherwise it lead to stack overflow. A recursion internally make use of stack. Every time when the recursive call is made, then activation record will be created in the stack, right? What is activation record? A stack frame memory allocated to recursive function call is called as activation record, right? The creation and deletion of activation record on actual function calling sequence. You know what is activation record? You will learn, you know very well. Activation record nothing but this is the stack frame or memory allocated to the recursive function call is called an activation record. इसमें क्या क्या होता है? 7 फील्ड होते हैं. This is the part of compiler design. ओके, एक्टिवेशन रिकॉर्ड नथिंग, कुछ नहीं होता है. जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं मेरे भाई, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल जंप कहाँ चला जाता है? उसकी डेफिनेशन पे, राइट? और वहाँ काम करके वापस भी उसको आना होता है. तो ये पूरा जो इन्वायरमेंट, कॉलिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट आपको मेंटेन करना है कि किसने किसको कॉल किया, कौन कॉल हुआ है, राइट?
इसके वेरिएबल क्या थे, उसके वेरिएबल क्या क्रिएट होंगे, राइट। वो रिटर्न करेगा, कहाँ जाएगा ये और वापस जब रिटर्न होके आएगा किस नेक्स्ट लाइन कौन सी आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो ये सारा जो इन्वायरमेंट है किसके थ्रू मेंटेन होगा, कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना इसको मेंटेन करने के लिए, दैट इज एक्टिवेशन रिकॉर्ड। वो कहाँ स्टोर होगा, स्टैक में स्टोर होगा, राइट। सो फर्स्ट देखते हैं बच्चे डायरेक्ट रिकर्सन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस वन? डायरेक्ट रिकर्सन मीन्स व्हाट सर? डायरेक्टली sir, a is calling to a n minus 1, this is direct recursion. Yes, tell me what is the answer for this one? What it print, student? Convert it to a4. Yes, what is a4? Direct recursion means this is direct calling to itself, right? A is calling to a. Okay, indirect means a is calling to b, b is calling to a. So this is indirect. Okay. So what is a4, student? What it print? So here this is n is equals to 0, then return. This is the base condition or recursion termination condition. Okay. Okay. If this is not true, then sir first print, then again call recursion a n minus 1 and print, फिर again उसको print कर दीजिए, right? So you have to do these two come 1 2 3 line. If n is non-zero, so then you have to execute 1 2 3 line. So my dear student, if you call for a4, so a4 is n equals to 4, student. This call is if you call this a4 function, right? You are calling this function, then n is pointing to 4, a4 is n equals to 0. Is it this is base case? No sir. Then what you have to do, sir? Line number 1 2 and 3 you have to execute this code, right? First line number 1 पे क्या लिखा हुआ है बच्चे? What is the line number? This print n. So print n means what? Print 4. Here I am p for print, student. Print 4, then recursive call sir a of 3. Then after this line print 4. Okay. Again, sir, this is recursive a3. Sir, a3 is the base case? No. Again, line number 1, 2, and 3. Line number 1 is saying what for this print 3 and a of n minus 1 is a of 2, print 3. This is a recursive call line number 1, 2, 3, bache. Line number 1 is what, sir? Print 2. And this is what, sir? A of 1. This is what, sir? Print of 2. What is this? Is this base case? No. So again, line number 1, 2, 3, and this is print 1, and this one is, sir, what, sir? A0 and print 1. This is the recursion tree, student. Internally, this recursion tree इस तरह का कुछ होगा. Now traverse from left to right. Boundary आप line बनाइए from left to right, this boundary line. So this A4 first print what, student? It first print 4, then calling to A3. A3 first print what, student? What, print 3. Then this is calling to A2, and A2 first print 2, student. And then this is calling to A1. A1 first print what, student? 1. Then calling to A0. Now A0 is written back. This is completed because what, sir? This is a base case. Okay, fine. Now after this print 1, and now, sir, A1 complete finish. So this is written back. Now print 2. Yes, print 2. Now A3 completely finished, written back. Now print 3. So it print 3. So now A3 is completely finished. Now written back. Now print 4. So it print 4.
Now this A4 is completely finished, it returned back. So this is the output, student. Okay. In this way you can evaluate a recursive question. Okay, इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चे. All right. Now next question, indirect recursion. Why so indirect? Because A is calling to B student and B is calling to A, right? So that's why this is indirect recursion. So what is the answer for this one? Yes, student reply answer for this one. What it print for A4? My dear student, this is the base case for function A, recursion termination condition, base condition, and here this is the base condition. Base condition means recursion termination condition, right? So let's suppose this condition false and go to else part. So you have to work sir line number 1 and line number 2, here line number 3, line number 4. In this case, this is line number 1, line number 2 and line number 3. Okay. So A4, what it print students? Reply answer. So first of all, A4, is this n is 4? Is this base case? No, sir. No, not base case. Go to else part. Else part, you have to use, sir, 1, 2, 3, 4 statement. 1, 2, and 3, 4 statement. Sir, line in statement number 1 is what, sir? B of n minus 2. If n is 4, so this is B of n minus 2 means this is B2. And print n. So it print what, sir? Print n means this print is 4. And 3, B of n minus 1. B of n minus 1 means what, sir? 4 minus 1 is 3. Right? And print n minus 2. Print n minus 2 means what, sir? Sir, 4 minus 2 is 2. All right. Now come to on this B2 section. So here B2, is this base case? No. Go to else part and execute 1, 2, 3 line. Line number 1 is saying, sir, print n minus 3. Sir, print n minus 3. This is what 2. 2 minus 3 is what, sir? Minus 1. A of n minus 1. So A of n minus 1 means A of 1. 2 minus 1 is 2. A of n minus 2. It means what, sir? A of 0. Okay. Now this is not recursive. Here B3. So B3 again execute line number 1, 2, 3. So line number 1 is saying what? In B mein, sir, print n minus 3 means print 0, n minus 3. And line number 2 print, sir, A of n minus 1. A of n minus 1 means what, sir? This is 2. 3 minus 1 is what? 2. A of n minus 2, it means what? Sir, A of 1. Okay. Again, this is a recursive code. A2, this is execute हुआ, execute line number 1, 2, 3, go to an else part, execute line number 1, 2, 3. Line number 1 is saying B of n minus 2, it means 0. 2 minus 2 is 0. Print what? N means 2. B n minus 1. B n minus 1 means what, sir? Sir, A of B of n minus 1, this is 2, so B of 1. Okay. And line number 4, sir, print 0. N minus 2, 2 minus 2 is 0. Sir, क्या ये further call होगा? No. So this is tree, student. Now this tree traverses from top to bottom, left to right, outer boundary. A4 is calling to B2. B2 is print first output minus 1. And this is calling to A1. But my dear student, A1 is written back. Understood? Because this is the base condition. Now this is calling to A0. Now, sir, A0 is written back because this is the base condition. Now B2 is written back. Now it print what, sir? 4.
Now again, after this calling to B3, and B3 is print what, sir? 0. Okay. After this calling to A2, and A2 is calling to B0, so this is written back, and after this it print what, sir? Sir, 2. And now this calling to B1, but B1 is written back. Why, sir? Because this is the base condition. Look here, this is the base condition. Okay. After this it print 0. Okay. Now this A2 is finished, written back. Now A1, sir, A1, this is the base case, so it is written back. So now B3 is completely finished. Now, sir, print 2. And this A4 is written back. Understood? So this is the output -140202. Understood? This is the output, student. -140202. Understood? Now, nested recursion, a recursive function which is passing itself as a parameter to a recursive call is called as a nested function. So, my dear student, look here, amn equals to what, sir? A of m minus 1, and this parameter itself is a function. So, that's why this is a nested recursion. Okay. A recursive function which is passing itself as a parameter to a recursive call is called as a nested recursion. You can check here, amn equals to a of m minus 1 and amn minus 1. So parameter itself is a function, right? Recursive function. So this is known as what, sir? Nested recursion. Okay. This is this is in theory of computation subject in TOC, you know, this is this mathematics, this function is known as Ackermann function, bache. In mathematics, this is Ackermann function. Okay. So what is A15, student? A15 is too lengthy. I am just display A12 ki how this function work, student. A1, 2, right? So A1, 2 comes which category? Sir, this case 1, case 2 and case 3. Sir, m equals to 0 hai? No. N 0? No. Sir, this comes under otherwise. So otherwise means what, sir? This is A of m minus 1 means this m is 1, n is 0. So m minus 1 is 0 and A of, sir, m, yani 1, n minus 1 means this 1. Okay. Again, sir, this is a recursive term. This comes under otherwise case. So what is the meaning of this, sir? M minus 1, it means 0. Here m is this one. A of m, n minus 1, 0. Again, sir, this comes under which category? 1, 0. Sir, n is 0. It comes what, sir? This category. N is 0. Second. So it is m minus 1 means what, sir? 0 and 1. And sir, if m is 0, then directly you can answer, the answer is what, sir? N plus 1. So what is the answer of this one? Sir, 1 plus 0. No, 1 plus 1. N plus 1, na? Yes, this is 2. This 2 pass here. Then 0, 2. This is what, sir? 2 plus 1. So it will be 3. 3 pass here, student. This is what, sir? 3 plus 1. The answer is 4, student. 4 come to at this place. So answer of this is what, student? 4. So in this way, this work out. Okay. What is the output of A15, A23? Or one more question. What is the output of A3? 4. Yes, everyone reply answer.
Yes, student, what is your answers? बताएं. So Ackermann function is very complicated function, बच्चे, right? So this is very complicated. You can evaluate sir 1 and 2 easily, but for third case, sir, lot of function generate student. Okay. So for this type of recursion, you can use some standard result for gate point of view, right? And actual procedure, this is the actual procedure. I told you this is the actual procedure, right, student? But you can use some standard result. You can use some standard result, बच्चे. A0n A0n is n plus 1, already written here. A0n is directly n plus 1. A1n n plus 2. A1 comma n is n plus 2 student. A2 comma n. A2 comma n, you can use 2n plus 3. A3 comma n is what, sir? Okay. You can use this standard result for Ackermann function. Okay. So according to this result, you can directly answer. So 1 comma n answer n plus 2, it means this is 7. Okay. What about 2 comma 3? 2 comma 3, n is 3, so 2n plus 3, n in 2 3 is 6 plus 3 9. Directly you can answer 7 9. And what about last one? 3 4. So this last 3 4 means what, sir? It is 2 की power n मतलब 4 plus 3. 3 4, 2 की power 4 plus 3 minus 3. This is 128 minus 3, so that is 125. So 125 is the answer for this question. Okay. So in this way, you can use Ackermann function. All right. Now next, and here I am writing. Just a minute, बच्चे. चलो भाई, आंसर बताएं. This is the example of nested recursion because nested inside this nested right this function के अंदर parameter यह है. This is again a function. So parameter itself it is a function. That's why this is a nested recursion. So what is the answer for this question, student? Yes, Sidhu.
Uddhav, rest of all candidate, where are you? '98. Sidhu is saying 98. Okay. So bache, here I am calling this function, bache, I am calling this function, so nested function is called, okay, and this n is pointing to this one, 97. Is 97 greater than 100? No. If it is true, this is the base condition, recursion termination condition. So if this is true, then return n minus 10. If this is not true, then again return, this is a nested, this nested recursion, student. So 11 add हो जाएगा बच्चे. So n of 97 is called, and it written what? Nested recursion n plus 11. 97 plus 11 कितना हुआ? Sir, 108. Okay. Now first evaluate this inside this one, student. Then what is the answer? Sir, n 108 is greater than 100, so it written what? Sir, n minus 10. n minus 10 का मतलब क्या हुआ? 98. Right? Now n 98, this is called, is 98 n is greater than 100? No sir, this condition is false. So again it called nested recursion, bache. It written nested recursion. Add 11 here. Sir, if you add 11, then what is this value? 109. Then first evaluate this inside value, sir. If this inside value is greater than, sir, 100, yes sir, n minus 10. So this is n minus 10, it means, sir, 99. Understood? And after this 99 is greater than 100? No. फिर से फर्दर ये नेस्टेड रिकर्सन होगा. 11 ऐड कीजिए इसमें. 11 ऐड किया तो कितना आएगा सर? 110 आएगा. Some mistake, student. First evaluate this inside. Sir, this value is what, sir? Minus 10. So this is 100. Again, this function call is 100 greater than 100. No, this condition false. Is called this nested recursion. Return is what, sir? ये रिटर्न क्या हुआ बच्चे? नेस्टेड रिकर्सन रिटर्न हुआ. नाउ फर्स्ट एवेल्यूएट, अंदर वाला एवेल्यूएट हुआ बच्चे, तो इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा सर? n 101. राइट. इसके बाद 101 एवेल्यूएट हुआ. 101 इज ग्रेटर देन 100. यस, n माइनस 10. सो n माइनस 10 इसमें से किया तो क्या आएगा सर? 91. So 91 is the right answer for this question, student. 101 और 91 माइनस 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना. उद्धव 101 आ रहा है और 91 आ रहा है. I think 91 is the correct answer. Okay. Yes, 91 is the right answer for this question. Now student, what is the answer for this? Get DA 2025 का क्वेश्चन है बच्चे ये. Get DA 2025. What is the correct answer for this?
sorry. What will be the output of this function, student? So basically here I am calling this function from here. Okay. So this f function is called, then a is pointing to what, 15, b is what's a 10. Okay. f 15 10. Sir 15 10 में first a is what, sir, 15 and b is 10. Is a equals to 0 है? No. This condition is false, right? A modulus 2 means this is term a modulus 2 equals to 1 है? Yes, this condition is true because 2 modulus 15 is 1. This condition is true. It return what is 1? In this case, it return this one. So basically, it return what? It return, sir, 2 into, sir, f of a minus 1 by 2 flow division. So this is 7. 15 minus 1, 14 divided by 2, 7 into 10. Okay. Again, this recursive function call, which condition is true? A is what's at 7, B is what's at 10. First term, this is A, na? Sir, A is pointing to this one, B similarly, sir, A first and B. So look here, A modulus 2 equals to 1 है क्या? ये तो false हो गया. Second, A modulus 2 equals to 1, yes, 7 modulus 2 equals to 1, condition true है. So again, it return what? Sir, 2 into, sir, f of 7 minus 1 by 2, this is 3 and 10. Okay. Now, again ये call हुआ बच्चे, and here a equals to what? So check this condition again one more time. A equals to 0 है? No sir. A not equals to 0, condition false. A modulus 2 equals to 1 है? Yes. 3 modulus 2 is 1, condition true है. So it return 2 into, sir, f of 3 minus 1 by 2, यानी कि 2 by 2 is 1 into 10. Understood? यही आएगा ना? Yes. Now sir, again a equals to 0 है? No. No sir, this a not equals to 0. Again first condition false, second if a modulus 2 equals to 1 true. So it return what? 2 into f of, sir, what? 1 minus 1 is 0 by 2, so this is 0 into 10. So okay. Now this return what is student? First condition, in this case, this condition true, a equals to 0. Okay. Sir, a equals to 0 है, it return what is student? It return b. This return b student. What is b? Sir, b 10. So if it return 10 directly बच्चे, so 10 come to this place, so this value equals to what? Sir, this value कितनी हुई? Sir, ये value जगह नहीं है बच्चे, so 2 into 10 is 20. Understood? So this is 20. Now 20 come at this place, so this value is 2 into 20 is 40. 40 come at this place, so 2 into 40 equals to 80. 40 come at this place, so 2 into 80 equals to 160. 160 come at this place, so the answer of this question is 160. (160) is the right answer for this question. Okay. Now next. Consider the following Python function बच्चे. This function define fun d s1 s2. Okay. If s1 is less than s2, then ds1 ds2 equals to ds2 ds1. Fun d s1 plus 1 s2 minus 1. क्या होगा? What does the Python function fun do? Select the one appropriate option below.
So my dear student, ये पहला ऑप्शन is saying it finds the smallest element in D from index S1 to S2 both inclusive. My dear student, check this code, student. DS1, DS2, it is just swap two numbers, right? It swap two numbers. So, but this is saying what it find the smallest element in D from index S1 to S2. So there is no smallest logic. You usually understand, right? So this is not answer, student. It perform a merge sort in place on this D, right? Between indices S1 and S2, both inclusive. So this is not a logic of merge sort. Merge sort follow divide and conquer principle, student. So this is not logic. You know very well merge sort. So this is not answer. Okay. Now come to C part. C is saying what, sir? It reverses the list D between indices S1 and S2, both inclusive. So this is hint you ki D is what, sir? List hai. D is what? Here D is list. So let I take D equals to one list, student. 5, 4, 3, 2, 1. This is list, student. Right. Okay. And S1 and S2 are the indices. Okay. S1 and S2 are indices. This is saying indices S1 and S2. So index of this one 0, 1, so 2, 3, and 4. Let I assume कि S1 equals to this one and S2 equals to this one. Okay. Okay, fine. If S1 less than S2, it check, sir, if S1 less than S2 means S1 is 0 is less than S2 is what, sir? 4. This condition is true now. If this is true, then swap DS1, DS2, DS2, DS1. If this condition is true now, yes, you know, this is true. If this is true, then swap two elements. So it is 5 and here this one is 1. And after this, you are recursively call what, sir? D S1 plus 1, S2 minus 1. You are recursively call this function again. Sir, recursively call, then S1 is pointing to what? D S1 plus 1 and S2 is what, sir? This one, 3. Understood? Understood. Again check, right? First this perform swap and I am calling this function. Sir, again recursively you call, then check S1, S2. Sir, if S1 is what, sir? 1 less than S2 is what, sir? 3. This condition again true, student. If this condition again true, then DS1, DS2 swap. So DS1 here 2 and DS2 is 3. So this is swap 4 and this one is 2. Now after this, you recursively again call DS1 plus 1 or S2 minus 1 के लिए. So right now in this case, this one ये सर ये चेंज हो जाएगा लोकल वेरिएबल बच्चे, ठीक है? ये S1 S2 फ्रेश हैं, वही वाले नहीं हैं. आप वो नहीं है, ये चेंज हो जाएगा. S2 इसके लिए कॉल हो जाएगा. दिस वन S2 is 2. फिर चेक हुआ, सर 2 is less than equals to 2. This condition is false. 2 is less than 2. This condition is false. False, you exit from recursion. So after this, you will get what, sir? After this complete code, you will get D equals to what, sir? 5, 4 and 3 उसी जगह पे है. 5, 4, 3, 2, 1. This is what? Reverse of list. Reverse. Okay, so C is the right answer for this question. What about D? This is saying it swaps the element in D at indices S1 and S2 and leaves the remaining element unchanged. So that's why this is false, student. Understood? So right answer is C. C is the correct answer. And both inclusive. Now, what is the right answer for this question?
So basically this is the definition of count function, right? This is definition. And here child dict, I am creating a dictionary, empty dictionary. This is create what, sir? Empty dictionary. This method create, sir, empty dictionary. Now after this I am updating this dictionary. Child dict 0 value is 1 2, key value 3 4 5, and 2 value 6 7 8. Okay. Understood? So finally, after this student, this dictionary is look like this one. Child dict, child dict. This dictionary look like 0 is the key here, and value is 1 2. Right? Similarly, sir, 1 is the key here, and value is 3 4 5. Right? Similarly, sir, 2 is the key, and value is what, sir? 6 7 8. So after updating this dictionary, look like this. दिस इज डिक्ट, बच्चे डिक्ट नहीं है, डिक्ट है, इसको करेक्ट कर लीजिए. Okay, now print it count child dict 0. I am calling this this function student child dict function. So you are calling what's a child dict function? You are calling this child dict function. Fine. And for this I is pointing towards a 0. This I is pointing towards a, this 0. Basically, here I equals to what, sir? Sir, 0. And here I am checking I0. I not in the child dict key. Sir, this method we have already discussed it, written what, sir? View object. Understood? Live window. We have discussed in list, right? So what is keys student? Let I write here. Keys क्या क्या है बच्चे? Keys in dictionary 0, 1 and 2. Okay. Now it check I not in child dict of key. Sir, I is 0, not in this. No, sir, this condition is false. If this is false, then this return not executed. Come to this line. Answer equals to what, sir? 1. Answer equals to what, sir? This answer is a variable and answer equals to 1. For j in child dict of I, for j in child dict of I, sir, this is checking what? For j in child dict of I, sir, child dict of 0. What is I here? I is 0. Child dict of 0 क्या है? Keys 1 2. What is the meaning of this one? J in child dict of this I. What is child dict 0? Child dict 0 is what, student? Child dict 0 is 1 2. So yes, for every value of key 0, this is this count is further call, बच्चे recursion further call for every value of key 0, student. J in child dict of I. Child dict I means what, sir? I is 0. So इसकी value के लिए call हो जाएगा. And now answer equals to, now answer equals to, what is the meaning of this? Answer equals to answer plus, what is the previous answer value? 1 plus, sir, count child dict. Let I write here count child dict C. Okay. Count function को मैं कॉल कर रहा हूँ C से. चाइल्ड डिक्ट ऑफ चाइल्ड डिक्ट को कैसे लिख लूँ शॉर्ट में? चलो पूरा ही लिख देते हैं. चाइल्ड डिक्ट ऑफ व्हाट, सर? वैल्यू. दिस 0 के वैल्यू क्या है, सर? वैल्यू इज 1 and 2. So this is called for 1. Similarly, count child dict for second value is what, sir? 2. 0 के करस्पॉन्डिंग सेकेंड वैल्यू क्या है? 2 है बच्चे, इसके लिए कॉल हुआ.
and finally you after completion of this you return answer. Finally you have to return this answer बच्चे, you have to return this answer. Okay, now further sir this is a recursion and this is a recursion. Okay, understood. चाइल्ड डिक्ट ऑफ 1 के लिए कॉल हुआ बच्चे. सर आई now next time sir this is called to this, next time this I is what sir, this I is pointing to this one. Okay, and check I not in child dict of keys, child dict of keys sir, I not in child dict of keys sir, child dict of keys yes ये belong कर रहा है, this condition is false. If this is false then answer equals to what sir, 1. ये recursion हो रहा है बच्चे, fresh this variable answer equals to what sir, 1. And j in child dict of I sir, j for every value of key 1, every value of this key 1 इसके लिए कॉल होगा बच्चे, every value of this key 1. Okay, so this is called for every value of key 1. एवरी वैल्यू ऑफ की1 क्या कॉल हुआ बच्चे, काउंट. चाइल्ड डिक्ट को मैं CD ले लूँ बच्चे, ये चाइल्ड डिक्ट इज कॉम्प्लिकेटेड सर. लेट आई राइट हियर एलियाज चाइल्ड डिक्ट इज दिस वन. किसके लिए कॉल हुआ सर, 1 की 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 4 5 राइट. सर 3 के लिए एंड चाइल्ड डिक्ट 4 के लिए एंड चाइल्ड डिक्ट सर किसके लिए सर 5 के लिए, 3 4 5 के लिए राइट. नाउ फर्दर रिकर्सिव कॉल हुआ बच्चे, रिकर्सन कॉल हुआ यहाँ से, तो क्या रिजल्ट आएगा सर, आई नॉट इन चाइल्ड डिक्ट ऑफ कीज सर, आई नॉट इन चाइल्ड डिक्ट ऑफ की, आई क्या हो गया बच्चे, अब आई फ्रेश क्या हो गया सर 3 हो गया राइट. नॉट इन की यस कंडीशन ट्रू है, ये क्या रिटर्न कर देगा डायरेक्टली 1 रिटर्न कर देगा बच्चे. इन दिस केस ये डायरेक्टली क्या रिटर्न करेगा सर 1. ओके जस्ट मिनट स्टूडेंट. फर्दर ये कॉल हुआ ओके करेक्ट इट, लेट इट करेक्ट इट स्टूडेंट. इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ये 1 प्लस होगा बच्चे, 1 प्लस दिस वन. सो ये रिजल्ट आएगा बच्चे राइट. इट रिटर्न व्हाट स्टूडेंट, दिस रिटर्न 1. सिमिलरली ये भी अब बच्चे ये चलेगा सर, 4 नॉट इन कीज, यस 4 नॉट इन कीज, ये क्या रिटर्न करेगा सर, इट रिटर्न सर 1. सिमिलरली दिस रिटर्न व्हाट स्टूडेंट, इट रिटर्न सर 1. सो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, यहाँ से भी बनाया सर, यहाँ से भी बनाया. ओके तो क्या रिजल्ट आया सर, 1 प्लस दिस 1 प्लस दिस 1 प्लस 1 तो 4. तो ये बेसिकली 4 रिटर्न करेगा राइट. फाइनली इट रिटर्न व्हाट सर, लेफ्ट हैंड साइड इज रिटर्निंग 4, दिस 4. ऑल राइट, नाउ कम टू ऑन द राइट हैंड साइड पोर्शन. दिस पोर्शन इज calling what sir, here answer equals to 1 because again call I2 हुआ sir, 2 not in child dict sir, 2 not in child dict, this condition is false. Now further this loop is called for this, for j in child dict of 2, यानी कि 2 के करस्पॉन्डिंग जो जितनी भी वैल्यू हैं उसके लिए कॉल हो जाएगा बच्चे. 2 की वैल्यूज सर, दिस 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है 6 7 8, इसके लिए कॉल हुआ. क्या कॉल हुआ सर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, ये कॉल हुआ सर 1 प्लस count is C and let I write child dict राइट. इस 2 की वैल्यूज क्या क्या है बच्चे, देखो 6 7 8. सो फर्स्ट 6 के लिए कॉल हुआ प्लस काउंट सर CD चाइल्ड डिक्ट, नेक्स्ट वैल्यू इस सर 7 के लिए कॉल हुआ प्लस C काउंट CD, नेक्स्ट वैल्यू किसके लिए कॉल हुआ सर 8 के लिए हुआ. ओके नाउ फर्दर इट रिटर्न व्हाट स्टूडेंट, इट रिटर्न व्हाट स्टूडेंट डायरेक्टली. अब बताइए 6 नॉट इन की, यस
रिकर्सन 6 नॉट इन चाइल्ड डिक्ट की, यस कंडीशन ट्रू है, सो डायरेक्टली ये क्या रिटर्न कर देगा सर, ये रिटर्न 1 करेगा। ओके, सिमिलरली सर 7 नॉट इन की, यस दिस रिटर्न 1। सिमिलरली सर 8 नॉट इन की, यस 8 रिटर्न 1। ओके, सो ये 1 1 रिटर्न किया तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4। सो बच्चे ये 4 रिटर्न कर रहा है। ओके, यहाँ रिकर्सन टर्म ये 4 रिटर्न किया और रिटर्न बैक हुआ तो ये रिजल्ट कितना आया बच्चे, ये रिजल्ट 1 प्लस दिस 4, 1 plus this 4 and here this 4, it will be total sir this is 9। तो फाइनली आंसर की वैल्यू क्या आई, 9। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिकर्सन यू रिटर्न व्हाट फाइनल आंसर, सो दिस रिटर्न व्हाट सर 9। 9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इशू। अंडरस्टूड, यस, थैंक यू। सो इन दिस वे रिटर्न फंक्शन इस तरह से बच्चे, ये पूरा कॉलिंग सिस्टम इस तरह से चलेगा बच्चे, राइट। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इसमें लिस्ट भी है, डिक्शनरी भी है बच्चे, रिकर्सन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत, और फॉर लूप का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि गेट में आने के चांसेस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिए, राइट। नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके, ओके तो सिद्धू इज अ प्रिडिक्टर, प्रिडिक्टर सिद्धू ने सही प्रिडिक्ट किया। So my dear student, this question is also very important question. This is GATE PYQ. I think GATE 2024 का PYQ है बच्चे ये भी। So consider the following Python program. Import math. This is the definition of function ABD. N1 equals to 0, N2 equals to 0, flag equals to 1. For I in range D, sir, what is D here? So D in every option D is 4. Sir, I in range D, N1 equals to N1 plus AI into AI, N2 equals to N2 plus BI into BI. For I in the range D, again this loop is running. Sir, AI equals to AI upon math dot square root of N1, AI upon math dot square root of N2. Right, and फिर I in range D, AI is not equals to BI and flag equals to 0, flag equals to 0 and break and return flag. So for which of the following input does the above algorithm produce 1 as the output? ये कह रहा है कि इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन पे दिस एल्गोरिथम 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डज द अबव एल्गोरिथम प्रोड्यूस 1 एज द आउटपुट। ओके, सो बच्चे 1 कब आएगा, 1 आउटपुट क्या करेगा सर, ये रिटर्न क्या कर रहा है सर, फ्लैग कर रहा है रिटर्न। सो फ्लैग इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, इस फ्लैग इक्वल्स टू 1 देन आउटपुट इज 1। अंडरस्टूड। सो फ्लैग 0 नहीं होना चाहिए सर, फ्लैग 0 कब होगा सर, फ्लैग 0 जब दोनों नॉट इक्वल होंगे तो फ्लैग 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड, तो फ्लैग 0 नहीं होना चाहिए, फ्लैग 0 नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन कभी ना ट्रू हो, ये कंडीशन कभी ना ट्रू हो तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए क्या है, ए और बी क्या है बच्चे, ये तो ये देखते हैं सर पहले ए एंड बी क्या है। और अकॉर्डिंग टू ऑल ऑप्शंस सर डी कितना है सर, 4 है। Sir, if D is 4, then it goes to up to sir 0 to what sir 3, because D is 4, and here sir 0 to 3 because of range function है ना। This one is what 0 to 3. Okay.
इनिशियली फ्लैग इक्वल्स टू कितना दिया गया है, इनिशियली दिस फ्लैग इक्वल्स टू दिस वन, सो हमें यही वन रिटर्न करना है बच्चे, वन रिटर्न करना है, इनिशियली फ्लैग इक्वल्स टू वन। फाइन। तो इस कोड में हो क्या रहा है बच्चे, ए बी डी, एन वन इक्वल्स टू जीरो, एन टू इक्वल्स टू जीरो, फ्लैग इक्वल्स टू वन फॉर आई इन रेंज डी, एन वन इक्वल्स टू एन वन प्लस ए आई इंटू ए आई। So n1 equals to what? First of all, we are sir calculating, sir n1 equals to, sir n1 0 plus this, यानी कि a0 square plus a1 square plus a2 square plus a3 square. Okay. Similarly for n2 student, b2 square plus b3 square. Okay. For I in the range D, sir ai equals to ai upon math dot, ये चलने के बाद after this I in the range D, ai equals to ai upon math dot square root of n1, bi equals to bi upon math dot square root of n2. It means what, sir? ai equals to ai upon under root of n1. So basically ये आप लिख रहे हैं ai upon under root of n1. So इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, okay, similarly for okay, so यहाँ पे बच्चे ए आई एंड बी आई ये क्या है सर, दिस इज नॉर्मलाइज वेक्टर, यू नो इन इन मशीन लर्निंग आपने ये पढ़ा होगा बच्चे, दिस आर द व्हाट्स आर नॉर्मलाइज वेक्टर। दिस इज नॉर्मल वैल्यू नहीं है, दीज आर द नॉर्मलाइज वेक्टर बच्चे। आप मुझे बताइए कि सर अगर ये दोनों नॉर्मलाइज वेक्टर इक्वल हों तो आप ये कंडीशन फॉल्स होगी, फ्लैग जीरो नहीं होगा, राइट और दोनों नॉट इक्वल हों तो फ्लैग जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, वी वांट सर फ्लैग वन, वी वांट फ्लैग वन क्योंकि इट रिटर्न वन। सो इन दिस केस both normalized vector must be equal, then it return what, sir, 1. So my dear student, how we can check, sir, both are equal, then how we can check both are equal? My dear student, a and b are equal normalized vector. Right, this is the definition of a normalized vector बच्चे, a and b are equal normalized vector, then b equals to ka and b upon a equals to constant, equal number of constant, right? So directly equal number of constant जिससे आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और b बाई ए आप निकाल लो बच्चे, आप b बाई ए निकाल लीजिए ऑप्शन में, जिसमें कांस्टेंट आ रहा है इक्वल नंबर, सेम कांस्टेंट आ रहा है, इट मींस बोथ आर इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल देन इट रिटर्न फ्लैग वन, राइट, फ्लैग वन, अंडरस्टूड। सो हाउ वी कैन चेक, सर, लेट चेक वन बाई वन ऑप्शन। So let first check, sir, P option. This is not good color. Let's check P option. P में A is what? 1 2 3 4. B is 3 4 2 5. So first check बच्चे BI upon sir AI. क्या ये सिमिलर कांस्टेंट आ रहा है सर A में? सर ये एक रिजल्ट कितना दे रहा है सर, 3 बाई सर 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके निकालिए,
3/1 इज इक्वल्स टू क्या 4/2 है क्या सर? दिस इज 5/3 इज 6/4 इज इक्वल स्टूडेंट? नो सर, नॉट इक्वल बच्चे. दिस इज 3, दिस इज 2 हेयर, दिस इज फ्रैक्शनल नॉट कांस्टेंट. सो बोथ, ये तो आंसर आपका नहीं होगा बच्चे. पी इज नॉट आंसर. वाई सो? बिकॉज पी पे दोनों नॉर्मलाइज वेक्टर इक्वल नहीं है. ये फ्लैग 0 दे देगा. हमें चाहिए क्या सर? 1 चाहिए. सो दैट्स वाई पी इज नॉट आंसर. ओके. नाउ सिमिलरली फॉर क्यू. Similarly for Q, sir, 2/1, 4/2, sir, 6/3, 8/4. Okay. So this value is, sir, 2/1 equals to 4/2 equals to 6/3 equals to, sir, 8/4. क्या वैल्यू है ये? क्या ये वैल्यू इक्वल है? यस सर, दिस इज इक्वल. दिस कंडीशन सेटिस्फाइड स्टूडेंट. Okay, this is 2, this is 2, this is 2, this is 2. Right? So this P and Q are equal normalized vector. If P and Q are equal normalized vector, then this condition is never true. It return flag equals to 1. So this answer, Q is the answer. Similarly, check for R student. Similarly, check for S. Okay. If you check for R, BI upon AI, 10/1, 20/2, 20/2, and sir 30/3, and sir 30/3 and 40/4. यस सर, दिस इज 10. कंडीशन ट्रू है. यस, कंडीशन ट्रू है. सो ये भी इक्वल नॉर्मलाइज वेक्टर है. क्यू एंड आर इज करेक्ट आंसर. व्हाट अबाउट एस? एस को भी देख लेते हैं बच्चे. अभी कुछ नहीं कह सकते हैं. एस को भी चेक कर लीजिए. सर इन एस, सर 1.1 अपॉन 1.1 अपॉन 1, 2.1 अपॉन 2.1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3.1 अपॉन 3 इक्वल्स टू, आई थिंक 4.1 है. 4.1 upon 4. Is it equal, student? No, this is not equal, right? If those not equal, so in this case it return flag 0, but we want flag 1, so that's why this is not answer. So right answer Q and R is the correct answer for this question. Okay, Q and R is the correct answer for this question. All right, student. Now, bache, what is the answer for this question? Yes. This is a permute function as chosen, string empty है, len_s equals to 0, print chosen. Else for I in the range len_s permute I plus 1, this chosen plus si, permute ab. दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन बच्चे. एक काम कीजिए, इसको ट्राई करिए. दिस इज होमवर्क. ओके, ट्राई करके, होमवर्क है, ट्राई करिए. ट्राई योर सेल्फ. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. ट्राई योर सेल्फ. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट? ओके, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन?
ये क्या आंसर आ रहा है? एवरीवन रिप्लाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच क्वेश्चन उद्धव? दिस वन और प्रीवियस क्वेश्चन? यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया? ये इसकी बात कर रहे हैं या पिछले वाले क्वेश्चन की? यस. ओके, इस क्वेश्चन को समझिएगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर फंक्शन बच्चे. दिस इज द डेफिनेशन, दिस आर फंक्शन बच्चे. ये डेफिनेशन है. हियर आई एम कॉलिंग दिस आर फंक्शन बच्चे. इफ यू कॉल दिस आर फंक्शन, देन फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ नॉट हैज एट्रीब्यूट आर नम, यानी कि आर फंक्शन के अंदर अगर नम नाम का एट्रीब्यूट नहीं है तो, नम नाम का एट्रीब्यूट नहीं है तो क्रिएट कर दो. इसका मतलब ये है, राइट? नम नाम का ये पहले ये चेक करेगा. यस, इफ नॉट हैज एट्रीब्यूट मींस दिस फंक्शन हैज एट्रीब्यूट. दिस फंक्शन जस्ट चेक कि आर फंक्शन के अंदर इस नाम का एट्रीब्यूट है या नहीं है. यस, क्या इसके अंदर फंक्शन के अंदर ये एट्रीब्यूट है? नहीं है. तो वही तो ये कह रहे हैं सर, इफ नॉट हैज एट्रीब्यूट, आर के अंदर इस नाम का एट्रीब्यूट है. नो सर, दिस कंडीशन इज ट्रू. फर्स्ट टाइम दिस कंडीशन इज ट्रू स्टूडेंट, राइट? फर्स्ट टाइम दिस कंडीशन इज ट्रू. अंडरस्टूड? इफ नॉट हैज एट्रीब्यूट आर नाम, आर फंक्शन के अंदर आर नाम का एट्रीब्यूट इसने पहले चेक किया. सर आर नाम का एट्रीब्यूट है क्या? नहीं है सर. इसके अंदर आर नाम का वेरिएबल किस, सॉरी सॉरी करेक्ट करना बच्चे, आर फंक्शन के अंदर नम नाम का वेरिएबल है इसके अंदर. ये चेक करना है. क्या इस आर फंक्शन के अंदर नम नाम का एट्रीब्यूट नहीं है? यस, नहीं है सर. कंडीशन ट्रू है. सो कंडीशन ट्रू है तो ये इसमें क्रिएट कर देगा बच्चे आर डॉट नम. आर डॉट नम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 7. तो ये इसके अंदर इसको क्रिएट कर देगा बच्चे. नम इक्वल्स टू ये इसके अंदर क्या करेगा? क्रिएट कर देगा. इस बात को समझिए फिर से. सर ये चेक करेगा क्या आर फंक्शन के अंदर नम नाम का एट्रीब्यूट नहीं है? यस, नहीं है. कंडीशन ट्रू है. तो आर डॉट नम इक्वल्स टू, इसने क्या किया बच्चे? आर डॉट नम इक्वल्स टू 7 से क्या हुआ सर? इसके अंदर ये क्रिएट कर दिया, यानी कि नम इक्वल्स टू कितना हो गया सर? नम इज पॉइंटिंग टू 7. सो मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, जस्ट लाइक इन सी प्रोग्रामिंग. ओके, लिख लेता हूँ. ऐसा होता नहीं है पाइथन में, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. फाइन. टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम. सो टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम से टेम्प में कितना आएगा सर? कितना आ जाएगा इसमें बच्चे? बोलो सर. 7 आ जाएगा. फिर आर डॉट नम इक्वल्स टू आर डॉट नम माइनस 1. सो ये मैं सी की तरह कर रहा हूँ, बट पाइथन में अलग तरीके से होगा बच्चे, ठीक है? ये कितना हो गया? 6 हो गया. सिंप्लीफिकेशन के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड इट रिटर्न व्हाट सर? टेम्प.
बट इट रिटर्न क्या कर रहा है बच्चे, ये टेम्प कर रहा है। टेम्प में आपने क्या स्टोर किया, 7। सो यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, लेकिन 7 आपने डिस्प्ले तो कराया नहीं, अगर यहाँ प्रिंट में डिस्प्ले कराते तो 7 डिस्प्ले हो जाता। कुछ नहीं होगा सर इससे, कुछ नहीं हुआ सर इससे, हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर सर वाइल लूप, अगेन यू आर कॉलिंग दिस आर मेथड, दिस आर फंक्शन, आप आर फंक्शन को कॉल कर रहे हो, राइट। फिर चेक किया इफ क्या नम नाम का एट्रीब्यूट इफ नॉट हैज एट्रीब्यूट आर इन नम, दिस कंडीशन इज फॉल्स। यस सर है, दिस कंडीशन इज फॉल्स स्टूडेंट, राइट। इस नाम का एट्रीब्यूट इसके अंदर बन गया है, कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो दिस लाइन अब नेवर एग्जीक्यूट, दिस लाइन इज नॉट एग्जीक्यूटेड, इट इज जस्ट लाइक ए स्टैटिक वेरिएबल, राइट, इन सी प्रोग्रामिंग। It is just like a static variable in C programming. In C programming, static variable initialize only once. So ये उसी के equivalent ये code है. Okay, fine. Now temp equals to r dot num. Temp में क्या आ जाएगा बच्चे, अब temp equals to r dot num से it is 6. R dot num equals to r dot num minus 1. So this is 5. And it return what's a temp. So temp is what sir? Temp is 6. So it returns 6 बच्चे. तो 6 है तो ये condition क्या होगी सर, true होगी. This condition is true. If this condition is true, you enter in this loop, and in this loop, inside this loop, you are again calling this r function. Okay. आप r को फिर से कॉल कर रहे हैं बच्चे, फिर से ये कॉल होगा r मेथड, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा भाई। टेम्प में क्या आ जाएगा, ये कंडीशन चेक हुआ सर, नॉट हैज एट्रीब्यूट ऑफ, नो कंडीशन फॉल्स बिकॉज है इसके अंदर ये एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज फॉल्स। नाउ टेम्प इक्वल्स टू r डॉट नम, टेम्प इक्वल्स टू r डॉट नम कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। नम इक्वल्स टू r डॉट नम इक्वल्स टू r डॉट नम माइनस 1, दिस इज 4 हो गया। एंड रिटर्न टेम्प, क्या रिटर्न किया बच्चे इसने, 5 रिटर्न किया सर। ये एंड स्ट्रिंग क्या है, ये यहाँ लगा दीजिए एंड स्ट्रिंग, एक स्पेस यहाँ पे ये आ जाएगा इस, ओके। आफ्टर दिस यू अगेन गो टू दिस लूप, अगेन यू आर कॉलिंग दिस आर फंक्शन, अगेन फिर से आर को कॉल करोगे बच्चे, तो क्या होगा, ये लाइन तो चलेगी नहीं अब सर, फॉल्स हो जाएगी सर। टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम, टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम कितना है 4, आर डॉट नम इक्वल्स टू आर डॉट नम माइनस 1, इसने 3 कर दिया। रिटर्न टेम्प, क्या रिटर्न हुआ सर, टेम्प कितना रिटर्न हुआ बच्चे यहाँ पे 4, 4 कंडीशन ट्रू है, यस। अंदर आप चले जाएंगे बॉडी में, ये कंडीशन ट्रू, अंदर गए, फिर आर, यू आर कॉलिंग दिस आर फंक्शन, अगेन आपने आर को कॉल किया, ये तो अब चलेगा नहीं। टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम कितना है, आर डॉट नम में बच्चे कितना है सर, 3 है। एंड आर डॉट नम इक्वल्स टू आर डॉट नम इक्वल्स टू आर डॉट नम माइनस 1, सो ये वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई, ओके। ओ स्टूडेंट, ये एक बार और कॉल कर रहा था, इसको फिर से एग्जीक्यूट करिए। ये मैं आई मिस दिस स्टेटमेंट, सो एक बार फिर से कॉल करिए। आई थिंक आपको एग्जीक्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चे, एग्जीक्यूशन समझ में आ गया होगा सर। फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ, फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ, इसने वो क्रिएट कर दिया, ये कंडीशन पहली बार में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट, और उसने क्रिएट कर दिया। अब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, तो ये एक ही बार बस इनिशियलाइज होगा। टेम्प में क्या आ गया सर, आर डॉट नम कितना है सर, 7। एंड नाउ आर डॉट नम इक्वल्स टू आर डॉट नम माइनस 1, ये वैल्यू क्या करेगी, उसे डिक्रीमेंट कर देगी, राइट। किसको सर, इसको, ये डिक्रीमेंट हो गए 6 हो गया बच्चे। एंड रिटर्न टेम्प, इसने क्या रिटर्न किया सर, टेम्प रिटर्न किया। टेम्प में कितना था सर, 7, सर 7 इज नॉन जीरो वैल्यू, सर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप प्रिंट कराते तो 7 डिस्प्ले हो जाता, राइट, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ फिर से आपने ये कॉल किया आर फंक्शन, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट आर डॉट नम नाम का एट्रीब्यूट है, आप यहाँ आ जाएंगे। टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम कितना आया बच्चे, 6 आया। आर डॉट नम इक्वल्स टू आर डॉट नम माइनस 1, सो ये वैल्यू 5 हो गई, फाइन, ओके। फिर रिटर्न टेम्प, क्या रिटर्न हुआ सर, 6 रिटर्न हुआ। 6 इज अ ट्रू, दिस कंडीशन ट्रू, यू एंटर इन दिस वाइल लूप, एंड नाउ फर्दर फिर से आपने कॉल किया, इफ नॉट हैज एट्रीब्यूट दिस कंडीशन फॉल्स। टेम्प में क्या आ जाएगा बच्चे, 5 आ जाएगा। आर डॉट नम इक्वल्स टू आर डॉट नम माइनस 1, सो दिस इज 4, दिस इज 4। एंड रिटर्न टेम्प, क्या रिटर्न हुआ बच्चे, 5 रिटर्न हुआ, सो ये डिस्प्ले 5 डिस्प्ले कर दिया, एंड स्पेस के साथ ये स्पेस आ गया, राइट, ओके। अंडरस्टूड सर। फिर से इसके फिर ये चलेगा, ये हम भूल गए थे, इसको देखिए सर, ये चला सर, ये फिर चला, फिर आपने कॉल किया नॉट हैज एट्रीब्यूट आर, कंडीशन फॉल्स, सो टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम, टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम कितना है सर, 4 है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी ये वैल्यू, राइट, ये वैल्यू 3 हो जाएगी। रिटर्न व्हाट सर, टेम्प, टेम्प कितना है 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा बच्चे, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, आप प्रिंट नहीं करा रहे हैं, राइट। आफ्टर दिस लाइन यू अगेन गो टू हियर दिस वाइल लूप,
सर आर, अगेन यू आर कॉलिंग आर फंक्शन, अगेन यू आर कॉलिंग आर फंक्शन टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम, आर डॉट नम कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया, सो ये 3 आ जाएगा, ओके, एंड आर डॉट नम इक्वल्स टू दिस वन, सो दिस इज 2, फाइन, एंड रिटर्न टेम्प क्या रिटर्न हुआ बच्चे, 3 रिटर्न हुआ, 3 रिटर्न हुआ, 3 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज ट्रू, अगेन यू एंटर दिस व्हाइल लूप एंड प्रिंट, अगेन यू आर कॉलिंग दिस आर। सर फिर से आर को कॉल किया, दिस वन, ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट हो गई, टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम कितना है बच्चे, सर 2 है, आर डॉट नम इक्वल्स टू आर डॉट नम माइनस 1, सो दिस इज 1, ओके, रिटर्न टेम्प क्या रिटर्न हुआ बच्चे अब की बार, सर 2 रिटर्न हुआ, सर यहाँ पे 2 रिटर्न हुआ, 2 आया सर, सो 2 आया तो इसने 2 प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर स्पेस, सर दिस स्पेस, ओके फाइन, नाउ अब नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, आर अगेन कॉल हुआ, टेम्प इक्वल्स टू आर डॉट नम, सो दिस इज व्हाट इज 1, आर डॉट नम इक्वल्स टू आर डॉट नम माइनस 1, सो दिस इज 0, राइट, दिस इज 0, एंड रिटर्न टेम्प क्या रिजल्ट आया सर 1 आया, आफ्टर दिस यू अगेन go to this while loop, okay, again go to while loop, again you are calling this r method, r method से फिर कॉल करोगे बच्चे 0 रिटर्न हो जाएगा, समझे, यहाँ से 0 रिटर्न होगा, फॉल्स हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्या प्रिंट करा सर 5 2, सो आउटपुट इज 5 2 इज द, दिस इज द आंसर, ओके, so in this way you can create just like a static variable type in Python with the help of this code has attribute, और ये static की तरह behave करेगा जैसे आपके C में static variable होता है, okay, so that's all in today class, all right, 5 2 is the right answer for previous question बच्चे, 5 2 आंसर इसका करेक्ट है, so आज की क्लास में इतना ही, दिस इज द एंड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन करिए, अब पाइथन के क्वेश्चंस की हम PYQ सीरीज लेके आएंगे बच्चे, पहले ये डेटा स्ट्रक्चर फिनिश हो जाए, उसके बाद उसकी PYQ सीरीज भी लेके आएंगे, ओके, जिसमें हम अराउंड 100-200 के आसपास क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, सो मंडे से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ऑन मंडे वी विल स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट, यस उद्धव अभी अपलोड करा देंगे, उद्धव अभी अपलोड करा देंगे, यस कल एंड आज वाला दोनों अपलोड हो जाएगा बच्चे, राइट, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मंडे को मिलते हैं।